चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसादने निर्विशेषण्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे वंशाकल्पतरुर्विश्वकृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। So we were discussing something last week about different kinds of Gita, Mahabharata, right? So this book called as May Science explains some of the uh, English educated, their connection to our Bhagavad Gita and Shastra came from English language, right? Rather than coming from their own mother tongue. I think most devotees also same thing. Right. Even the translation what they read in Marathi, Kannada, it has come from English to Marathi, English to Kannada. Right. So, and therefore, yes, of course, any language for that matter presents the profound wisdom uh, with the same psychology as the Sanatan Dharma presents, has to be accepted. But it is very rare. If you study the, people those who study Islam, even some rickshawala, he will know some Arabic. He will study Quran in Arabic language only, originally. In Karnataka, maybe other places also, there were professors who were like, teaching Hebrew connected to Bible, especially the Old Testament. But unfortunately, with our own, any subject what we studied in college, there was some kind of psychological weakness that it has to be studied in English only. Naturally, language along with its grammatical construct, it also has its own psychology. Recently, I heard one Swaminarayan appreciative Australian person. He was speaking in Hindi. And he said, very common sense, he said, if you see Canada, if you see America, if you see UK, if you see Ireland, if you see New Zealand, if you see Australia, these are called as English speaking nations. He said 99% of these people do not speak a second language. Less than 1% may learn some Spanish. Right, nowadays some of them learn the Mandarin language because of the connection to China, and very rare will learn Indian languages, including Sanskrit. But I said, as a Bharatiya, it is but natural for you to know more than two languages. But still you feel inferiority complex because you don't know English. ना इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाषा, जिस भाषा में जिस ग्रंथ की रचना की गई है, of the Bhagavad Gita as it is, Prabhupada writes, one is the language barrier, and the language itself being a barrier. Language itself is a barrier. So therefore, one of the greatest psychological limitation of European civilization is the way they see things, and the way we see things is very different. It is more centered around black and white.
It is more centered around exclusivity as against inclusivity. Right. So therefore, the German people, they had this great fascination, sometime for the wrong reason. They were looking for their own roots also. You see, Dutch people conquered, the French people conquered, the British people conquered, the Portuguese people conquered. They made their own colonies in different parts of the world, Africa, India, South America. But you don't hear Germans doing that. Even though in one sense, if you study German produced more philosopher, more writers, more hardworking people, more enterprising. They did not conquer. In one sense, within Europe also, they were not given much importance. So therefore, what they did was they started, became the founder of the Indology. Indology means studying India. And what were they studying? They were studying, there was Adolf Holtzmann, is the one who guessed an Indo-Germanic original epic at the root of three epical traditions: Greek, German, and Indian. बहुत important है. If you study Neitzche, it's a very interesting geopolitics. उनके संस्कृति के साथ में पढ़ने से समझ में आता है कि क्या कनेक्शन है. If it was not for Christianity, India could have easily appropriated Europe with its knowledge bank. Originally, the Germans began by having a positive fascination with Mahabharata, basically Bhagavad Gita. But at some point of time, the Christian Germans, who also studied Indology, they put a break to it. Right? They are the one who started basically finding faults. आजकल हम देखते हैं, when people study Hindu Shastras, when they study Hindu temples, their goal is to find faults. उनमें दोष का ही देखने लगते हैं, क्योंकि समाज इस भौतिक जगत में होने के कारण, शास्त्र इस भौतिक जगत में होने के कारण, दृष्टि द्वंद्व की होने के कारण दोष को देखना कोई बड़ी बात नहीं है. Right? You can find limitless faults. Yesterday I saw this Swami Vivekananda issue, like some lady has found that verse where Prabhupada explains, remember in the fourth canto of the Bhagavatam, where he explains women like to be raped. There is a context to that. But when you write, when you present, when it is part of your book, right, and everything in database, it is there. And naturally, regular people would not ever appreciate that statement. Just like for the vegetarians, Swami Vivekananda eating fish becomes a very abhorring. How can a sannyasi eat a fish? तो कॉन्टेक्स्ट को न देखना, केवल स्टेटमेंट को जज करना, ये हमारे शास्त्र परंपरा से विरुद्ध है, ये हमारे न्याय दृष्टि के विरुद्ध है. Therefore, whether it is Prabhupada, whether it is anybody else, you'll always find something lacking if you choose to look only that. When Shishupal came as a participator in the Rajaswaya sacrifice, वो केवल प्रतीक्षा कर रहा था.
कि मैं क्या दोष देखूं. When he saw Krishna was selected as the Agra Puja, for Agra Puja, he could have told then. No, he could have said if he had a complaint, if he had objection, he could have said. But his mentality was let them complete it. Let them make this mistake. Then I'll point out the mistake so that they will not get the benefit. ये देखो कितना कितना मतलब संकुचित, कुत्सित और narcissistic behavior शिशुपाल में था. Only when the yajna was done, then he started speaking ill about Krishna. Not one, not two, not three. One of the greatest complaint he had about Sri Krishna was कि he has given up the mainland. क्योंकि सभ्यता हमेशा नदी के तट पर हुआ करती थी, समुद्र के बीच में नहीं. राइट. जहां समुद्र के बीच में लोग बसते हैं, they are not considered as very civilized people. So there was a valid point. जो वेद को मानने वाले, वेद संस्कृति को अत्यंत शुद्ध दृष्टिकोण से देखने वाले, for them inhabitation within the island of ocean is not considered as very good. इसलिए चाणक्य पंडित भी अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि our civilized city should be on the bank of Ganga because pure water is so much connected to pure samskaras. Sai Kshetra, when you do yajna, one of the main ingredient for deity worship, when you are installing the deity, to find a soil from a place where the wild boar has digged from his tusk. वो मट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. हमें मट्टी चाहिए यज्ञ के लिए, पूजा के लिए. हमें अग्नि चाहिए, हमें पानी चाहिए. राइट. प्राणायाम की आवश्यकता होती है. जो 5 एलिमेंट है शुद्ध अवस्था में, उसका उपयोग करना ये धर्म संस्कृति की एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है. इसलिए द सॉइल नियर द रिवर इज वेरी प्योर. राइट. देयरफॉर मथुरा देखो, मायापुर देखो, वृंदावन देखो, अयोध्या देखो, रंगनाथ देखो, they are all connected to the water body, especially पवित्र नदियां. तो वहां की भाषा बदल जाती है. जैसे पानी बदलती है वैसे वाणी बदलती है. There is lot of great subtle diversities which is integrating also. So naturally the Germans were fascinated because we have discussed Friedrich Nietzsche. No, he saw the limitation of Christianity. He saw how Christian world is so limited, and they will force ordinary people to become leader because they are believing in that. Your Nishtha is one of the main qualification to be appointed as a spiritual leader. Right. Sometime, in all spiritual organization, including ISKCON also, your intellectual discretion is undermined, and your loyalty, whether it is blind or wise, there is no discretion between loyalty. Right. महत्वपूर्ण होता है कि अब निष्ठावान होना चाहिए. So Friedrich Nietzsche said, no, this will ruin your civilization. Meritocracy को नष्ट कर देगा. Beautiful, very interesting point. So therefore, what he was looking for German, Greek and Indian tradition. इसलिए Germans are hard working. They believe in one kind of merit. और also racist भी है. जितना आप अमेरिका में जाते हो, लिबरल कंट्री है, रेसिज्म है,
hypocritical racism is very large in liberal countries. They act as if they're liberal, but they also have racism. Germans are outright racist. And therefore this guy, Friedrich Nietzsche said, आपका पहला क्वालिफिकेशन क्या है लीडर बनने के लिए? वो बोलता है आपका ब्लड देखना पड़ेगा, आपका खून कैसा है. And what do you think Chanakya Pandit says? He also says about blood. What do you think वेद पढ़ने के लिए आपका खून ही देखा जाता है, राइट? खून देखना देखो कितना रियलिस्टिक है. आप किसी का भी खून नहीं ले सकते हो. A good person wanting to give their blood is not sufficient. There has to be blood match होना चाहिए. Genetics आ गया उसके भी गहराई में. So therefore when we say, again this is small group, we can discuss, जितना कृष्णा ने कहा है चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, एक श्लोक है वो, उससे ज्यादा सुचिनाम श्रीमते गेहे योग भ्रष्ट विजायते कहा हुआ है. Your birth certainly matters. Yes, your character is more important, but your birth matters. The mere fact is that you are born in a particular family. That means there was a precedent. There was a credibility. आप किसी बुद्धिमान लोगों के घर में, जो उनके जो आचार है थोड़ा पवित्र है, उनके घर में जन्म लिए हो, so there is some tangible advantage in regards to being born royal family. देखो ना पूरे देश का भी अगर आप देखोगे अभी भी एक्स रॉयल फैमिली के प्रति they may not have the power because of the socialistic ideology which India accepted, sometimes for the right reason, for the wrong reason. But फिर पूरे देश ने नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद में राहुल गांधी, राइट? उसकी प्रियंका भी आ गई, फिर वो राघव बड्रा का बच्चा भी आएगा. इमेजिन दैट हाउ इन द वर्ल्ड एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन एक्सेप्ट दिस एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट. क्योंकि जन्म के साथ में जो संबंध है ना, साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, राइट? who is a Prabhupada disciple. Dynastical reality, इसलिए जो नित्यानुवंश अद्वैत वंश that still flourish, may not be as big as ISKCON, but they do flourish like that. तो उन्होंने क्या देखा? वो खून देखा. और ग्रीक, जर्मन और भारत, why did not see England, why did not see Arabic world? Because there are lot of similarities. There are lot of similarities. परसों किसी ने प्रश्न पूछा, बट नो प्रभु जी सेड कलौ शूद्र संभव. हमने क्या किया ना, एक एक वर्स को लेकर उसको बार बार ठोका हुआ है. We have concluded Shastra based upon isolated verses than the Shah itself. चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म. नेचुरली ब्राह्मणत्व किसी में भी हो सकता है, राइट? ब्राह्मणत्व किसी में भी हो सकता है और होना भी चाहिए. लाइक टेक फॉर एग्जांपल द 4 varnas and ashram. Varna is a psychological emphasis, right? You cannot be only one varna. ब्राह्मण का कर्तव्य होता है अज्ञान से लड़ना. क्षत्रिय का कर्तव्य होता है भय से लड़ना. वैश्य का कर्तव्य होता है अभाव से लड़ना. और शूद्र का कर्तव्य होता है आलस से लड़ना. Now if you do this in English, courage, resources, wisdom
and what? Freedom from lethargy. Can you say, I focus only on wisdom? Your focus may be on only wisdom, but without the three other qualities, you cannot sustain your growth. आपको चारों की आवश्यकता है, और वो चारों गुण जिनमें सही प्रमाण में होते हैं, नॉट समान प्रमाण में, सही प्रमाण में होते हैं, इज एन इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग. Whether it is Satyayuga or Kalyuga doesn't matter. Even if you say Kalau Shudra Sambhava, within that also there is Shudra Sattva, there is Shudra Tamo, there is Shudra, there is Shudra Brahmana, Shudra Kshatriya, Shudra Vaishya, Shudra Shudra. You can see from that perspective also. But you can also see from the foundational principle of the Vedas that the land is land of a duality. The Rakshasas were there in Satyayuga and Devatas are there in Kali Yuga also. You'll find the good Brahmanas existing now also. They are not so visible compared to those Brahmanas like Nambudri, Dange, Chatterjee, Mamata Banerjee. Imagine कि जो धर्म के विरुद्ध थे, कम्युनिस्ट फिलॉसफी को लेकर आए, और उसमें भी डांगे जैसे कम्युनिस्ट थे. इफ यू स्टडीड अबाउट हिम, ही इज मोर कम्युनिस्टिक बिकॉज ही सॉ द एक्सप्लॉइटेशन. तो उनके अंदर थोड़ा धर्म था. तो इसीलिए वर्ण कभी भी यू कैन एम्फसाइज कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन आप बाकी तीन के बिना प्रगति नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो. You cannot move forward. So the context of Swami Vivekananda, I'm going everywhere based upon what is happening. The context in what Swami Vivekananda said about reading, playing football instead of Bhagavad Gita, eating meat, उसके पीछे context है. One of my friend is sending, he has read the 9 volumes of Swami Vivekananda's work. Right? You can quote Prabhupada, you can repeat, but when you repeat in a public place, you need to have the backing of Purva Paksha. देखो ना कितना बड़ा counter productive हो गया है. You can't just quote what Prabhupada said. You can quote within your Bhagavatam class. Even that, as I think Krishna Kishore Prabhu said, even that you cannot do because anybody can record. And not because of Vyavara, but it is a शास्त्रिक reality. आपको पहला पूर्व पक्ष सही प्रकार से समझना होगा ताकि आपके अंदर कॉन्टेक्स्ट के साथ में बोलने के लिए उत्तर पक्ष is very important. So therefore he made the statement about एक लड़का उनके पास में आया और वो वैराग्य को प्राप्त करना चाहता था. He was skinny, diseased, बीमार सा लग रहा था. उस समय कॉन्टेक्स्ट में बोला उन्होंने, अच्छा है तो फुटबॉल खेले भगवत गीता पढ़ने के बदले में. He was not anti Bhagavad Gita. And in Bengal, if you study carefully, in Bengal, this is the critical analysis many Bengali leaders have done. उसमें कई तथ्य है कि आप किसी को भी जबरदस्ती से एक ही मार्ग देते हो, पॉलिटिकल अलर्टनेस नहीं है, सोशल सेंसिटिविटी नहीं है, तो पर्सन हु प्रैक्टिसेस वेजिटेरियनिज्म abruptly and suddenly he gives up the food habit, परंतु उसका तमोगुण और बढ़ने लगता है, निष्क्रियता बढ़ने लगती है. It's very interesting and very important principle in context, in that context, because Bengal suffered a lot of exploitation.
विदाउट द पौरुषत्व, बोला मीट खाना बंद मत करो, खाओ आप। एंड आगे आप पढ़ोगे तो जैसे आपका शुद्धत्व, आपका पर्पस बढ़ने लगेगी, अपने आप छूट जाएगा। इट विल गो अवे व्हेन यू हैव अ डीप रियल स्पिरिचुअलिटी, वो अपने आप छूटने लगेगा, राइट। सो देयरफॉर द पॉइंट इज, 1 minute, बड़ी कॉल। So therefore it is an important principle to understand before making our oh, I open my notes. Yeah. So therefore the Germans, Indians and Greek people have lot of similarity, but Christianity ने उसको रोक दिया। And unfortunately what happened, our idea of whether uh, the Advaita philosophy and especially the Vaishnava philosophy, we borrowed more from Christian idea than the idea of Plato, which is more closer to Mahabharata, more closer to Indian concept of Purushartha. Like I'm doing this Ramayana session. आप तुलसीदास के रामायण को पढ़ोगे और वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे, तुलसीदास जी के रामायण ने इतनी बड़ी क्रांति की, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, you can't ever underestimate its contribution to keeping the North Indians into the fold of Sanatana Dharma. At the same time, आप जब ये वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण में पुरुषार्थ को ज्यादा जोर दिया है वाल्मीकि महर्षि ने। He does not make a distinction between Dasharath Maharaj suffering for his action or Bharat suffering for his connection to Kaikai. For every action there is equal and opposite reaction. So कर्मा थ्योरी को सिंपल है, किसी भी क्रिया है उसमें प्रतिक्रिया आएगी, आप उसको लीला बोलो, आप उसको कर्म बोलो, the principle will remain the same. वाल्मीकि महर्षि focuses more on Purushartha, व्यास मुनि focuses more on Purushartha. परंतु आप 15-16 सेंचुरी के लिटरेचर को ले लो, वहां पुरुषार्थ है क्योंकि सनातन धर्म के है, लेकिन ज्यादा दैव पे फोकस किया गया। अरे मंत्रा और कैकई और शूर्पणखा, दे वर पार्ट ऑफ द गेम प्लान। अगर वैसा नहीं होता तो भगवान राम लंका की ओर नहीं जाते, वहां रावण के साथ में युद्ध नहीं करते, इसलिए इट हैड टू हैपन लाइक दैट। ऐसे करते 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 क्या हो गया, जब 12,000 श्री वैष्णव मारे गए, you made a statement also that was a will of God to take them back to Vaikuntha planet. हाँ, इमेजिन ये जो दैव पे इतना जोर देने लगे, पुरुषार्थ को कम करने लगे, जहां पुरुषार्थ कम हो जाता है वहां वेजिटेरियनिज्म इजी है टू प्रैक्टिस। एक योद्धा को इफ नॉट हंटिंग द एनिमल, राइट, एक हिंसा के साथ में उसका संबंध होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। It will be disastrous that if everybody becomes a vegetarian in Bharat, imagine वैलर ही नहीं रहेगा युद्ध करने के लिए, और युद्ध तो प्रकृति का नियम है, you cannot avoid that, it's part of your entire existence only. I think I told recently one devotee, he is in an army, young लड़का, बचपन से भक्त है, कांदा लहसुन कभी खाया नहीं है, typical smaller town का है, right, he joined and he passed the NDA, right, he came out as a lieutenant colonel, he went through some difficult, जैसे वो जिस रेजिमेंट में ज्वाइन किया, इन इंडियन रेजिमेंट अभी भी प्राणी का बलि चढ़ाते हैं। I think is part of the कुमाऊं रेजिमेंट, if I'm not wrong, तो उसको चिकन काटना पड़ा,
जिसने कांदा को कभी स्पर्श नहीं किया, he had to actually cut off the head of a chicken. And naturally the mother is a sincere devotee, so much of disturbance. अरे प्रभुजी काय होणार त्याला, त्यांनी कोंबडी कापली, त्याला कर्म लागणार नाही का? राइट, it's about natural sweet inquiry. राइट, आई सेड अरे वो तो गया है आदमियों को काटने के लिए, he has gone to kill people. So unless he has that fierceness, how will he fight? And the cause is higher. अगर उसने अपने संकल्प को सही प्रकार से लगाया, then what will happen? He will not incur karma. That is what Krishna is saying in the Bhagavad Gita. Do I believe Bhagavad Gita? Do I believe vegetarian philosophy? Right. So therefore ये जो ग्रीक, भारतीय, जर्मन में ये जो मैस्कुलिन मोरालिटी बहुत स्ट्रांग है, करेज, विजडम, मॉडरेशन एंड जस्टिस, ये सारा मैस्कुलिन मोरालिटी. राइट, महाभारत में पुरुषार्थ पे जोर दिया है भगवान ने. रादर देन यूजिंग भगवान फॉर योर अपलिफ्टमेंट, you become an instrument of God to help humanity rise. Right? इसलिए या ईश्वरी भाव की आवश्यकता होती है कि मेरे में कुछ तो है, मैं दे सकता हूं. Before you call that aham dasosmi, you should have the foundation of aham brahmasmi. aham brahmasmi के बिना I am aham dasosmi makes you निष्क्रिय, makes you offer less to yourself and offer less to others. Right? ये दुर्भाग्य हो गया. This is a reality. डॉक्टर नारायण ने जब पहली बार बोला, उन्होंने पहली बार बोला कि वैष्णविज्म में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव आ गया. And he quotes Madhvas, where they believe some souls are eternally condemned. राइट, द पूतना का वध होने के बाद में पूतना के शरीर में जो स्वर्ग की थी उसको उच्च गति प्राप्त हो गई, और पूतना ने क्या किया, अधोगति को प्राप्त किया. गीता का 16 चैप्टर का एक श्लोक दे कोट टू से दैट. राइट, तो ये सेड, ये हमारे वेद के विरुद्ध हो गया, बिकॉज वेद कहता है कि जीव फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ इटर्नैलिटी है. कहां से प्रवेश कर गया, कैसे आ गया? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज द सीरियन क्रिश्चियन केम देयर. Very, very important for us to understand this. Therefore, when you say it's a Krishna's will, आपको अगर रामायण पढ़ना है तो वेदांत के दृष्टिकोण से मत पढ़ो, वाल्मीकि के दृष्टिकोण से पढ़ो. दशरथ महाराज में दोष देखो, रामानुजाचार्य ने देखा उसमें दोष. When he was asked, why did Dasharath go to heaven? Right? Because Ramayana says that he came along with Indra. उनको वैकुंठ की प्राप्ति तो नहीं हुई जब तक भगवान राम लीला कर रहे थे. I reconcile between the two, saying that after Lord Ram went back to the spiritual world, Dasharath Maharaj must have been shifted there. That is what our Vaishnavacharya say, but this is what Ramanujacharya को पूछा गया. मतलब रामायण के वो तो बड़े खुद लक्ष्मण के ही एक प्रभाव है ना उनमें. So they asked him, why did he go to heaven? He said, no, he should have gone to hell. But only because he was Ram's father, he was given heavenly planet. वैष्णव के दृष्टिकोण से हेल और हेवन बेकार है दोनों भी. तो ये उनका संदेश था, ये उनका था. राइट, तो इसलिए पुरुषार्थ को जोर देकर दैव उसके साथ में है. इसलिए पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध में, unfortunately this shloka or the understanding of this shloka is minimized, and we focus on sarva dharman parityajya. वही स्टेटमेंट कि अपने सारे ड्यूटीज को त्याग दो. Just focus on your bhakti principle. Do as minimal possible in regards to your material life.
ये स्वधर्म को ही नष्ट कर देता है। जब स्वधर्म नष्ट हो गया, स्वधर्म इज द ब्रिज फॉर योर स्वरूप धर्म, राइट। एंड ये लोगों ने कितने सारे गीता को बनाया, वेयर देर जर्मन ग्रीक इंडिया को इंटीग्रेट करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम, they couldn't handle the philosophical aspect. So they have this idea, the Germans have idea, Vyasadev, he was the one who brought the Brahminical concepts in the Mahabharata. वो गीता में भगवान कृष्ण को भगवान बना दिया। हमारा इश्यू नहीं है, हमें चाहिए रेसिज्म, हमें चाहिए अपना रेस, अपना जो वॉरियर रेस है, अपना जो विनर रेस है। दे वर नॉट एबल टू रिकंसाइल between Brahminical and Kshatriya combination. They were not able to reconcile Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra combination. तो हम लोग एक्सक्लूसिव बनने लगे। देखो ना, आधुनिक गुरुकुल है अभी जो भी ब्राह्मण लोग चला रहे हैं, जो शंकर मठ का है, श्रृंगेरी का है, फिर बाद में अपना श्री वैष्णव है। They only take the Brahmanas. This is a colonized kind of Gurukul, because Gurukul means you have to have all the three Varnas studying there. All the student will study the Vedas, but only a Brahmana can teach. All the student will learn archery, but only Kshatriya can use. All the student will study Artha Shastra, but only Vaishya can implement. हाँ? तो जहां केवल एक वर्ण का ही गुरुकुल बन गया, वो क्या बन गया, आइसोलेटेड हो गया, इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, अपने ही दृष्टिकोण को सब दृष्टिकोण बनाने लगे। बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है, गलत। बुद्धि के साथ में क्रिया भी चाहिए, क्रिया के साथ में रिसोर्सेज भी चाहिए। वर्ण धर्म देखो क्या खतरनाक साइकोलॉजी है, राइट। So similarly, what happened? There were 6 German Gitas. Pantheistic Gita by Adolf Holzmann. उसने गीता में बहुत सारा पैंथिज्म को देखा। The theistic Gita of Richard Gabe. उसने केवल गॉड को देखा उसमें, पर्सनल गॉड। एपिक गीता बाय हरमन जाकोबी, राइट, स्टोरी को देखने के लिए प्रयास किया, रेस को देखने के लिए प्रयास किया। कृष्ण गीता बाय हरमन ऑडनबर्ग, Krishna is the forefront in the Bhagavad Gita, but Krishna himself also puts himself in the background also many times. Ishvara Sarva Bhutana. He said, Arjun, if you don't practice devotional service, if you are not practice regulative bhakti, if you cannot do karma yoga, at least to do good karma, right? तो उन्होंने उसको ओवर एम्फसाइज किया। ट्रिनिटेरियन गीता बाय रोडोल्फ ओटो, जैसे वहां क्रिश्चियनिटी लेकर आ गया। आर्यन गीता बाय जेब हॉर एंड ब्राह्मणिकल गीता बाय जॉर्ज वन सिम्पसन। और उनका उद्देश्य क्या था, ये सारे लोगों का, few points they say, a rejection of theology and philosophy. हमको ये सब देखना नहीं, हमको वॉर को देखना है। अनबाउंडेड कॉन्फिडेंस in the historian's ability to recover an original, कि महाभारत में भीष्म को महान बनाना, व्यासदेव को निकाल देना, युद्ध को ही महाभारत का मेन मुद्दा बनाना। एंड थर्ड इज a rejection of Indian hermeneutics as uncritical. जो 1 लाख का वर्ष है उसको निकालते निकालते छोटा बनना, उसको निकालकर केवल यूरोपियन, जर्मन और आर्यन या फिर ग्रीक जो मेल मोरालिटी है, जो मैस्कुलिन मोरालिटी को प्रेजेंट करना। And then a claim of sovereignty over both text and tradition. Can you imagine? The purpose of Indology was to control our Shastras, control the narration, and also control the tradition. And unfortunately, for larger extent, even though I practice Sanatan Dharma, they have controlled our tradition by so many means, by so many means, right? इसलिए बहुत ही fascinating है this book.
was recommended by Pradyumna Prabhu for me to read. मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी fascinating है. We'll stop here. Any questions or comment? Prabhuji, I think Radharani Mataji has a question. या दामोदर दुलाल राधा रानी दोनों, मतलब मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, it was expected because the Western controlled Christian organization. See, Modi ji had to go to France. He went to America. If he had to make a statement, he had to make a statement against Christianity. The problem with the politician, after all, he's a businessman, comes from a Gujarat background. So playing a soft card, because you think he will not speak. Why would he not speak? He had to speak. But then you realize what is the population of Manipur. If I speak anti-Christianity, मेरा investment कम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा. So maintain mum. He must have been advised. We will handle that. Right. Meanwhile, knowing very well it could be a counterproductive also. So it's a Christian-dominated place who are basically trying to undermine the Methi community, which is predominantly Hindus, 55% of them. But ये जो पूरा constitutional एक है कि हिल जगह पे जो Hindus cannot buy a land. फिर जो हाई कोर्ट ने जो बिल पास किया where the Methi Hindu community also become part of the OBC group or some part of SC/ST group, so they can own land. So ये जो cartel है, the Christian drug and China nexus have created this ruckus, and naturally our left liberal, our soft Hindus, they are targeting Modi. Right? It's a very dangerous thing. Because we don't create counter narratives. Not only that, we don't care only. The last 4 days, I heard from 2 good families where their family are telling them, अरे forget, focus on your own self. अपना job करो, अपना पढ़ाई करो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ. इससे समाज सेवा कुछ अच्छा होता ही नहीं. And these are all educated people, pious people, one Brahmana, one Kshatriya. राइट, ये हमारा रवैया. बोलते कि अपना जाने दो, बाकी लोग का अपना फोकस करना है. राइट, इट डजंट मैटर. पीपल हैव गॉन टू वृंदावन इन लार्ज नंबर. अरे पुरुषोत्तम मास में केवल अपने बारे में भी नहीं सोचना है ना. दिस इज द टाइम फॉर डूइंग लॉट ऑफ चैरिटी आल्सो. कृष्णा डिड चैरिटी एवरी डे. राइट, सो देयरफॉर व्हेन यू आर सेल्फिश मटेरियली, you also become selfish spiritually. And selfishness was a core character. Then spirituality makes it more selfish, because आत्मा मतलब मेरा ही है, मेरे को मेरा देखना है, तल्लीनता देखना है. Don't distract it for yourself. Go to Vrindavan. Just focus on doing what you need to do. You need to go back to Godhead. Right? ये जो है ना, ये बहुत डेंजरस है. आप गोलोक चले जाओगे, मैं जोक कर रहा हूं, नहीं जाओगे, इतना जल्दी नहीं जाओगे. Your own children, means all, whoever it is, right, they are not even continuing the legacy of spirituality. Right. So therefore, it is a very sad part that politically all the dynasty politics has come together. जो पहले सर्टन था कि फिर से 2024 में एनडीए आएगी, now there is some doubt, not that there is all doubt, but there is some doubt, because knowing the dynastic ego, they will not work together. और इसलिए जो प्रजाप्रभुत्व है ना, democracy is one of the most dangerous thing, because it goes as far away from the truth as possible. Therefore मोदी जी ने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं किया. राइट, अगर योगी होते थे वो स्टेटमेंट करते थे, बट उसके कारण बाकी देश के लिए इकोनॉमिकल
sanction बैठ जाता था. So it's a very, but at least our people should understand Manipur violence is the violence created by the Christian Chinese, intrusion, and unfortunately our political parties will try to shake their own opportunity in that at the cost of a Rashtra which everybody else is doing. मुझे भी करना है, मेरे अध्यात्म की उन्नति करनी है. ये जो षंडत्व का अध्यात्म है ना, where focusing on your own self, this is the time to do charity also. आप एक 4 गरीब को स्पॉन्सर करो, कभी जो वृंदावन गया ही नहीं होगा हो, या फिर उसके विद्या के लिए स्पॉन्सर करो. राइट, आवर चैरिटी ऑल्सो हैज टू बी डिस्क्रीट. इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, अप्रोप्रिएट वाइज बुद्धि के साथ करना है, भावनात्मक नहीं करना. सो देयरफॉर मणिपुर, what it is presented is much different from what is the reality. Hindu community has been blasted, but Christians are acting as if they are hurt. Probably I had a question about this. After the Vivekananda issue that has been happening, there was one, I think Ramakrishna Math Sannyasi or someone, he put a video which was quite popular on YouTube. So, he was making a statement, he was quoting, saying that there are so many sadhus, he was saying, that who have eaten meat or, who may have smoked, like he gives the Sant Gajanan Maharaj example or Arabindo, so many people. He says that, there are people who have done this, but they have achieved great spiritual success in their life, like that he was saying. Right. So he was saying that it is good. He was very polite actually. He was saying it's good that ISKCON has good rules like that, but you don't impose that on everybody or say that this is the only way to success. So he was saying that there are people like that. And also, when we hear about this Neitzche and so many such German philosophers also, they may have not been following what we call as 4 regulative principles, right? I mean, they may have been eating meat throughout their life or whatever. But still we see that these people were quite sharp in their observations and, conclusions which they wrote, etc. So I had this, but at the same time, we see that the traditional sampradayas, not only ISKCON, whether you see Shankara, Madhva, Sri, and these people have always been vegetarian only, at least the Brahminical order of it. Yeah. Right. But these so many other spiritualists who came in the last many years, like all these people, they may have smoked or done these things. So I was just thinking, because generally we tend to think that all these people are outright cheaters or scoundrels, etc. That's how we generally have been preaching. But when I heard this, or when I see people like this Neitzche also, then this question comes to the mind that even people who perhaps did not follow that Brahminical principle of regulative principles, how come they achieved a sharpness or even a growth in spirituality, which seemed to me a little difficult to reconcile? Any thoughts on that? Yeah. So therefore, if you study the traditional Brahmanas, they did not get into this debate of making everybody vegetarian. They knew that you can actually reach certain level of sharpness. Imagine if you're a Kshatriya living in a Gurukul, did you not kill the animals there? There is a story in Vishnu Puran where Krishna killed and then Sudama objected, and then they came to Sandipani Muni. So there was a connection to Lord Ramachandra met Guha. He was like a hunter, right? He is like a butcher, kind of a Vyada only. Right, Lord did not eat because he had taken the rule of only pure food only. पहले से, in fact, in the Valmiki Ramayana says the Raghukul के लोग कभी भी प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाते थे. They never ate. But we see Dashrath Maharaj hunting. So what is the difference between hunting and eating? थोड़ा सा अंतर है. तो ये कोई समस्या का कारण नहीं था. They never, like our community, I think I've told also, we were initiated by Sri Vaishnavas in the 12th century, right? And the Sri Vaishnavas traveled, they preached. तो उन्होंने केवल उनको हरि भक्ति दिया, शास्त्र पढ़ने के लिए थोड़ा सा सिखाया. उनके फूड हैबिट के पीछे किधर पड़े ही नहीं हो. ये जो प्योर वेजिटेरियन जो आ गया ना, जो मॉडर्न जो सोसाइटीज है,
creating one brand, अरे everybody मांस नहीं खाना चाहिए, सब लोग वेजिटेरियन बनना ही चाहिए, राइट, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. दिस नियो हिंदुइज्म हैज ब्रॉट दिस आइडिया. उसका भी कारण हो सकता है बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम सो डेंस. Prabhupada in the Western world had to be exclusive to maintain the non-diverse people. They cannot handle diversity. Imagine if everybody was like Radhanath Swami Maharaj going to this guru, that guru, you know. So उसका एक disadvantage है, because not because it is disadvantages in its very core nature, because having multiple shiksha guru is beginning of the Chaitanya Charitamrita. Uh, that verse which talks about plural of guru tattva. तो शास्त्र भी आपको कहेगा मल्टीपल टीचर रहेंगे आपके साथ में, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाए तो इसलिए नहीं बता. वेजिटेरियन का भी ऐसा हो गया. मैं फिर read आयुर्वेद टेक्स्ट रिटन बाय मेरा जो मैंने जो स्क्रीन रखा हुआ है, it is on Ashtanga Hridayam by Vagbhatta. Now Vagbhatta was basically Jain, writing about Vedic Ayurveda. In that part, he also talks about taking chicken soup during the winter season for those who have liver problem. ब्राह्मण जो जैन में कन्वर्ट हो गया, परंतु फिर भी वेद के जो भाग है, आयुर्वेद इज पार्ट ऑफ द वेदास, उसके बारे में लिख रहा है. बट ही इज एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली रियलिस्टिक. लिखता ही कुड हैव अवॉइडेड द चिकन वाला, बोलता बीमार के लिए लगता ही है, राइट, क्योंकि जीवन से जीवन है, मनुष्य जीवन जानवरों के जीवन से श्रेष्ठ है. So if you study carefully, the traditional Brahmanas, while maintaining their purity, they did not get into the habits of people's eating. ये जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है, उनके गुरु मध्व ब्राह्मण है, उनका कम्युनिटी 80% मांस खाते हैं, ट्रेडिशनली खाते हैं. अभी पहली बार उनके गुरु ने बोला रहे अभी तो बहुत खाने के लिए सब कुछ है. यंग गुरु नए आए हुए, राधा कुंड सेंड मी द वीडियो. उन्होंने बोला अरे अभी छोड़ दो, अभी सब कुछ आपको मिलता है. You can have a replacement rather than why you eat meat like that. कई लोग सुनेंगे, कई छोड़ेंगे, कई नहीं छोड़ेंगे, फिर भी they will not be separated. They will be given service. If you go to Bengal, if you go to Odisha, if you go to Bihar, उपनयन संस्कार चल रहा है. As part of that festival, the guests जो भी आएंगे वो मांस खाएंगे. Not because of modernity. वो उनका संस्कृति हो. It's part of the reality. Therefore, इसलिए the first lecture which Swami Vivekananda gave, he talked about Brahmanas should learn compassion from the Buddhist. तो मेरे को थोड़ा सा उससे हो गया था, ऐसे क्यों बोल रहा है? Because the Brahmanas never focused on non-violence so much. They focused on intellectual reality. इसलिए आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, they were able to integrate without contaminating themselves. South Indian Brahmins, if you go and study Madhwais also, उन्होंने जाके fisherman को vegetarianism spread नहीं किया, हरि भक्ति दिया. Same thing, Shankaracharya did not get into that. It's a very interesting when we study the full science of how the traditional Brahmanas operated as against the modern organization operated. ये बहुत ही बड़ा अंतर है. तो इसीलिए naturally whether because आपका खाना तमोगुण का, take for example Maharaj's father, no, he never became a vegetarian. वो खाते रहे अपना. कई लोग बोलते रहे ऐसा, आपको मालूम है क्या? People are still in denial. How can you do that? Or they don't like to discuss this subject. All right, he was eating. लेकिन उसका जो व्यवहार है, जेंटलमैनलीनेस है, तो बाकी गुणों में सबको हो सकता है. लाइक वन डिवोटीज फादर इन लॉ, ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मेरी बहू है ना, वो इतना कांदा लहसुन करती है, लेकिन उसके खाने में जो चटपटा है, सोने में जो टाइमिंग है,
तो बोले उसमें तो कोई सात्विकता दिखती ही नहीं मेरे को, यू आर ओनली फोकसिंग नो कांदा लहसुन नो टी कॉफी, बट आप सारे एरिएटेड ड्रिंक पीते हो, नो कचरा मैदा खाते हो, और रात को कभी टाइम पे सोते नहीं हो। बोले यहाँ तमोगुण नहीं है क्या? So we defined what is sattva in only two items. We defined sattva only in not meat eating. Right? Sattva the foundation principle के साथ में कितने सारे पहलू है, उसका पालन किया क्या? है ना? ऐसे यार मुझे इसका उत्तर क्या बताऊं मैं? ऐसे रियलिटी, आपके प्रश्न में दम है, आपके प्रश्न में सत्य, आपके साथ प्रश्न में लॉजिक है, और इनके इम्पोजिशन में क्या है? केवल एक 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 नरेटिव बना दिया, अरे कांदा लहसुन खाओ मत खाओ, क्यों नहीं खाओ? नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है। चॉकलेट खा सकते हैं क्या? जीबीसी ने अलाउ किया चॉकलेट खाने के लिए। सो वी डोंट यूज अवर ब्रेन, वी हैव गिवन द ब्रेन टू समबडी एल्स टू यूज, यू नो। तो इसलिए आप अगर आपके दृष्टि से देखोगे, आपके आजू बाजू में सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यू नो, जो पढ़ाते हैं अच्छा से, नेचुरली मोर विल बी ब्राह्मण्स ओनली नाउ आल्सो, but there will be somebody who will be teaching so brilliantly, you know, सिगरेट फूकते होंगे, या फिर मांस भी खाते होंगे, थोड़ा शराब भी पी लेते होंगे। तो यू नो एस्ट्रोलॉजर, सम ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर यू विल फाइंड व्हाट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे आर, लेकिन वो शराब पी लेते, बिकॉज वो ज्ञान ही अध्यात्म को दे सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आपके हैबिट से उसको कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है कि केवल ये हैबिट उनका तमोगुण का है, बाकी बाकी हैबिट उनका सत्वगुण का हो सकता है। You know, I told in one of the school talk, it is better to eat meat cooked by your mother than to eat a vegetarian food regularly in a hotel, you know, क्योंकि उसका अभी, you know, like if you go, I stayed next to a hotel, I grew up, फिर भी कभी खाया नहीं, क्योंकि मैंने देखा है होटल के अंदर क्या क्या होता था। लोग स्नान नहीं करते हैं, यू नो, मल त्याग करने के बाद भी ठीक से हाथ धोते नहीं है, उधर से कुकिंग करते हैं। इंस्टेड इफ यू आर अ वाइज मैन, इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू नो, फॉर मी मोर देन वो शुद्धता, यू नो, जो यू नो इट इज अ कंटामिनेटेड फूड, फॉर मी इट्स अ सिंपल प्रिंसिपल, या गंदा होता है, ये लोग कुकिंग करने वाले गंदे होते हैं, यू नो, वो मैंने देखा हुआ, इसलिए आई कांट इवन गो टू गोविंदा's रेस्टोरेंट। मैं ऐसा कोई शुद्ध वाला की बात नहीं कर रहा, नहीं जमता है। तो अगर कोई जा रहा है, तो यू डोंट क्रिएट अ बिग डील आउट ऑफ इट, ओ हाउ कैन यू ईट, हाउ कैन यू डू दिस। बेसिकली लेट पीपल लिव द वे दे वांट, यू गिव नॉलेज, नॉलेज गिवर कैन नॉट बी अ रूल मेकर। ब्राह्मण का ज्ञान देना है, रूल बनाना नहीं है। रूल बनाने वाला क्षत्रिय है, क्योंकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यू नो, ही इज बाय, अभी देखा मणिपुर का ही देखा, you know, you don't have a choice, you know, your business is coming from the western world which is dominated by Christians, right? तो मुंह बंद रखा इतने दिन के लिए, और इसका अभी कांग्रेस है, अरे देखो इतना समय हो गया, आवाज नहीं खोला, आवाज नहीं खोला, आवाज नहीं खोला। फर्स्ट ऑफ ऑल यूर हिंदू पार्टी, secondly you are dealing with a Christian problem, thirdly you have a business to do with the western world, which is, you know, however much they say, however liberal they are, if something happens in India, they will talk about these issues. It's a very dynamic and very interesting. Thank you, Babu. Thank you. Yeah, stop here. Hare Krishna. Mayavad philosophy, Damodar Dulal Prabhu, again, you know, in what context Prabhupada said, in what context he did not say, और उसको ही वेद वाक्य बनाना, यू नो, आपने पढ़ा है क्या? आपने मतलब हम लोगों ने कभी खोल के देखा है क्या? He said when Prabhupada repeated and he got away with it in his times. You repeat now, oh तुलसीदास रामायण, immediately कोई पकड़ लेगा, आपका वीडियो हो जाएगा, 50 लोग देखेंगे, राइट, और आपको गाली देंगे, और आपने पढ़ा है क्या? आपको मालूम है क्या क्या पढ़ा है? ना मैं प्रभुपाद, does not become a reference point. You have to judge Valmiki Tulsi Ramayana by Tulsi Ramayana itself, not by one statement of Prabhupada. You are basically, you know,
doing harm to Prabhupada's contribution by quoting him out of context without proper Nyaya Shastra. We believe in Prabhupada, whatever he said. You sound to be so, humans, all of us will sound so stupid and so radical. कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको एक हमारे ग्रुप में एक ब्राह्मण लड़का है इन ट्विटर इन कोरा, राइट, उसने क्या स्टेटमेंट डाला है, I'll read it. Okay, it's very important for people to understand कि कितने आपने पढ़ा होगा वो क्या लिखता है. I'm just opening it. Yeah, I'm opening that statement. He said, don't forget the entire armies of both Kauravas and Pandavas were wiped out completely. Only Sri Krishna and his devotees survived the massacre. Both NDA and India will be wiped off. Only Krishna consciousness party headed by Krishna conscious monarchy will survive for 10,000 years. Jai Srila Prabhupada. उसको 12,000 लोगों ने देखा है, और जब भी उसके ऊपर क्या लोगों ने कमेंट किया व्हाट एवर कमेंट, बोले यार दिस कल्ट मेंटालिटी इज व्हाट मेक्स मी डाउट ISKCON. काइंड ऑफ सेम. Oh, is it making a sense? Crackpot, right? तो ऐसा लिखता है, देखो इतना मतलब उसके अंदर एग्रेशन है टू राइट लाइक दैट. ब्राह्मण लड़का है, वैष्णव चरण दास नाम भी उसका देखो कैसा है. तो दिधर तो बोले ले रहे तो पागल है, ऐसा सब लोग नहीं है, या सब लोग नहीं हो सकते, लेकिन है इज ऑन द पब्लिक प्लेस. सो देयरफॉर have you studied Valmiki Tulsi Ramayana to repeat the statement of Prabhupada? To repeat the statement, to back up his statement, you have to show where there is Mayavad. That is what scholarly debate takes place. Otherwise, by being very loyal, blindly loyal in a public space, saying this is what he has said, I will believe and I'll stand by that, you only embarrass Krishna and your parampara. Because that is not how the debate happens. Debate happens based upon the merit of the compilation. जब आप पूरा पढ़ोगे, बोलेगे देखो इस भाग में इस वर्ष में ये मुद्दा आया हुआ है जो तुलसीदास जी इस प्रकार से बता रहे हैं. Then people will say, okay, makes sense, right? आपने पढ़ा ही नहीं उसको, तो how does it become? आप बोल सकते थे जब सोशल मीडिया नहीं था, अभी बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे. Okay, thank you. We'll stop here.